Hello, good evening, everyone. I am full 1 minute late. Now, what does that mean? That means that my Instagram live just won't go out, which is very interesting because मैं 4:58 से बैठ जाती हूँ and I wait for 5 o'clock, and then I try and dabble with my Instagram to kind of come online, which is very interesting for me. I know you're holding on. So now what it does for me is it makes my life very interesting. I initially I used to get really baffled and I used to get really worked up. अरे यार 1 minute late हो गया. Has it ever happened to you that in emotions like this and in times like this when you're when things just don't go your way and you're like नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, मतलब people are waiting. Hi Aparna, people are waiting for you to join in, and even if you don't, if no one is waiting and you're like thinking मैंने commit किया है, I have made a commitment and things people should join. I should stand. I should be living up to my commitment, and I should be kind of going out there and be present. You see, that's another very interesting part of emotions, which is my experience also. I remember back in 20 years back, whenever I used to have meetings. Hi, thank you all for joining in. So 20 years back when I used to have, and I was in Delhi, so for me to travel, so right now I'm in Bangalore, and Bangalore traffic, and every day traffic is like a menace. So I used to kind of travel a lot for my meetings. Now, no matter how much I kind of used to keep a buffer time, I always quintessentially used to, because उस वक्त ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शंस हो रही होती थी हर जगह. There used to be sort of what do you say, those flyovers were being constructed. I'm talking about 15 to 20 years back. Now every day, for some reason or the other, I would get late for my meeting, and I would get really anxious, very anxious, because I didn't like getting late. That was one part of it. The second part of it was whenever I used to come on time and somebody else wasn't on time, okay? And then I used to get anxious and then especially when my team members were not on time, then I used to get anxious again, because मुझे लगता था मैंने time दिया है, मेरी तरफ से commitment हुई है, and then others aren't holding on to their part of the deal. Now you must have practiced this, you must have kind of seen this happening. All the while there are things which are happening which are beyond your control. Things which are happening that आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप इतना वर्कअप हो जाते हैं, इतना it's like you want to be there, you want to be a part of, you want to commit, you have made a commitment, you have a deadline, you've done every bit of your effort, you have put in your 100-200%, and yet things are not working to giving you the kind of results that you want. Now what is यहाँ पे हम लोग इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या फील करते हैं? हम लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ कर दिया, we've done everything, we have kind of, and but still things are not working out. So there are techniques where we say कि ठीक है, we should have like design thinking में एक होता है कि आप you try faster and then you fail faster, and then you again see कि what could have gone differently. So that's one part of it, that okay ठीक है, but for that you have to like keep trying and working on it. Secondly, which is feedback analysis and stuff. Secondly is you have to manage your inner self. अगर आपने ये समझ लिया है कि ठीक है सिचुएशंस आप ही नहीं करेंगी, तो एक आप अपनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से मैनेज करेंगे. कि मान लीजिए देयर इज अ मीटिंग दैट यू हैव टू बी एट, and the meeting was supposed to be at 2,
and the meeting, and for some reason you have already realized that अभी चीज बात नहीं बन रही है. For some reasons there's a traffic jam, there's something, you will not be able to go to that meeting in time. You will not be able to reach. So what do? You set expectations, you calm yourself, and then you think, and this is very important. वो लाइन जब आपके पास होता है कि आपका दिमाग एकदम परेशान होता है, you have to be there. It's like sometimes it's more like कि भैया आपका ये डील ब्रेकर है. उस वक्त अगर आपने एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर दिया, फर्स्ट विथ योरसेल्फ कि क्या होगा, क्योंकि आपने अपनी सारी मीटिंग्स को उसी हिसाब से रखा हुआ है. यू सेटअप कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एक इंसिडेंस बताती हूँ. I was supposed to go to my children's school and I had planned one meeting at 11 and another at 12. My children's school was about 10 minutes distance from my house. I left conveniently at a gap of 40 minutes का वो लेकर चली थी मैं. However, that particular day, I had no idea, but that particular day there was some commotion, some problem in some other zone, and this entire belt जो मेरा way था was jammed. As a result, that 10-minute distance took me around 1 hour. 11:30 I was stuck at that place. Now what did I do? I called up the school and rescheduled my second appointment. And the first appointment I informed कि भैया मैं लेट हो रही हूँ. In every probability I'll miss the appointment. So what I could do is, I know the teacher would not be free. क्योंकि वो टाइम ऑलरेडी निकाल के बैठी थी, so she would not be free. So all I did was I requested if she could make time, since I am coming there, it will be great. If it is not possible for her to make time completely, if it's out of possibility, then I will come some other time. Now what I did in those two cases was, in the second case I reset the second meeting by rescheduled by half an hour, which I knew कि मेरी second meeting तो कहीं नहीं जा रही है. मेरी first meeting के लिए I kind of requested and I accepted कि this is beyond my control, and I did not just show expecting कि भैया मेरी बात सुनी जाएगी. When I went there, I was lucky. I had to wait an extra hour, but then I was lucky कि the teacher did meet me, and both the teachers had that meeting the same day. My takeaway from that incident was, I remained calm. I reset my expectation with myself. I reset my expectation, teachers' expectation, and the school's. Hi Harsh, thank you, hello. स्कूल की एक्सपेक्टेशन मैंने अपने साथ सेट कर ली थी, और मैं जब वहाँ पहुँची तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो रीसेट एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, इट वॉज ईजियर फॉर स्कूल टू अकोमोडेट मी. वो मुझे नाराज होने के बजाय वो मेरी बात सुनने को तैयार थे. नाउ दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द ह्यूज डिफरेंस विच हैपेंस. कि अगर आपने एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, बहुत सिंपल सी होती हैं. ये बेसिक मैनरिज्म्स होते हैं. अगर आप लेट हो रहे हैं, आप फोन करके बता देंगे कि आप लेट हो रहे हैं. वो आपसे घर पे भी एक्सपेक्टेशन होती है, वो आपसे बाहर भी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कोई अगर आपका वेट कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो आप उनको फोन करके बता दें. बहुत सिंपल है. कई बार when we are growing up we don't realize that these things are important, but when we do realize, when we ये सारी चीजें जब हम ऑफिस वर्क में लेके जाते हैं, these actually are, जब हमको माँ बाप हमारे बोलते हैं कि बेटा घर जब लेट हो रहे हो या फिर इतने टाइम तक आ जाना, एंड इफ फॉर सम रीजन यू आर लेट, ऑल यू हैव टू डू इज, अब तो सबके पास मोबाइल्स हैं, पिक अ फोन अप एंड टेल कि भैया मैं इतने टाइम से लेट हो रहा हूं. हाउ विल दैट मैटर इज that particular habit you will also carry in your workspace. How? If for some meeting you are getting late, you will immediately inform your
counterpart or the person you are accountable to कि I am getting late. Now that goes a very long way. That goes a very long way because इससे आपके बारे में क्या impression गया? This person does not just respect their time. This person respects my time. This person respects the way of our interaction, and they would want to kind of interact with you. तो वो जो respect बनता है आपके लिए वर्क स्पेस में, पर्सनल स्पेस में, वो एक अलग ही लेवल का होता है. नाउ दैट इज वेयर यू नीड टू, एंड दिस इज हाउ द रिस्पेक्ट बिल्डिंग इन वर्क स्पेस स्टार्ट्स. वर्क स्पेस रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद गुड मैनर्स. गुड मैनर्स जो आपने बचपन में या फिर अपने व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू हैव व्हेन यू आर इनकलकेटेड, बिकॉज व्हेन यू से ना कि हम लोग गुड मैनर्स के बारे में क्यों बात करते हैं बार बार, दिस इज हाउ, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली आई still remember I had this habit of because हमारे स्कूल ने आदत डाली थी किसी के केबिन में घुसने से पहले I used to ask for permission, because वो हमको घर क्लास के अंदर घुसने नहीं देते थे, वरना may I come in के बगैर we used, and our office did not have that we used to have an open door policy, so they used to just say तुम लोग अंदर आ जाओ, तुम you don't have, you're not children anymore. However, that space that created a sense of sort of thing कि जब मैं जाने से पहले पूछती थी तो मैं उनके स्पेस को रिस्पेक्ट दे रही थी. दैट वॉज माई थिंग. एंड देन एज अ रिजल्ट व्हेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम, एंड इट वॉज वेरी क्लियरली कि वो चीज शेयर भी हो रही थी. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज couple of things. When you get into certain habits like informing well in advance, habits like respecting people's space, getting those small stuff, it goes a long way into जब आप अपने वर्क स्पेस रिलेशनशिप्स में रहते हैं तो वो एक बहुत दूर तक जाता है. इट गोज अ लॉन्ग वे देयर बिकॉज people want to people identify you not just with what you deliver at the end but also how you deliver. सिर्फ आपके काम से नहीं बट कैसे वो काम किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उन सब से दिखा जाता है. एंड वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट यू are in a zone where you can inculcate an atmosphere of respect not just for you but also for others, you are taken more, and it's also about you taken with a different how would I say, your exact thing, you are in a much better position to put your point across because you have connected all the points that makes you a better employee or a better individual. There are certain times when you feel कि मैंने जो सीखा है in terms of अपने घर में, in terms of manners, in terms of certain things do not apply at workplace. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप देखेंगे कोई और बहुत जोर जोर से बात कर रहा है तो आप, and then suddenly they'll come in the meeting and start shouting at the rooftop, and or they will probably feel as if कि वो आपकी बात को दबाने के लिए वो सिर्फ ये एक इंस्टेंस हो रहा है. बिकॉज ये भी होता है बहुत बार वर्क स्पेस पे कि somehow some people come from the background कि अगर मुझे अपनी बात कहनी है तो मुझे चिल्ला के कहना पड़ेगा because that is how they have seen it happen. That is how they have seen it happen in their workplace previously, or how it was done पहले जहाँ पे भी वो थे. But that does not mean that is the only place or that is what you have to resort to.
if you have anything that you would like, any such incidents जहाँ पे आपने ऐसा कुछ देखा है कि where your manager or your colleague has started suddenly shouting about what या फिर कोई ऐसा कलीग जो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और आपको लग रहा है ये क्यों जबरदस्ती जब चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों चिल्लाना है, और someone who typically kind of gets into an atmosphere which is very difficult to manage. So do get that point across. बताइएगा मुझे, मैं जरूर देखते हैं कि हम उसका मिलके हम उसको कैसे what kind of thought process we can kind of come out with. There are two ways of dealing with such people. आप जब आप वो चिल्लाए तो या तो आप नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो सीनियर हैं तो आप चुप कर जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप ये कहते हैं कि भैया इनके सामने कौन चिल्लाए. द सेकेंड इज और अल्टीमेटली यू एंड अप लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू से कि यार मेरे बस की नहीं है. The second is you actually come up with ways in which you can there was one thing that as an HR person I told someone, हमेशा सर फोड़ने का जरूरत नहीं होता है कि कई बार दीवार अगर एक खड़ी हुई है तो दीवार के आसपास जाने का भी तरीका होता है. You have to find ways in which you can navigate through, not through the wall but सराउंडिंग और उसके अराउंड जा सकते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अगर कोई नहीं सुन रहा है तो और क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप सुन सकते हैं, और क्या टेक्निक्स है जिससे आप अपनी बात भी रख लें, और वो जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई आपके ऊपर आके चिल्ला रहा है और चिल्लाया जा रहा है and then you suddenly kind of in a mood कि यार अब बहुत हो गया. What are the techniques? One, humor is a very good technique. Humor actually, and if you are generally not very humorous per se, sarcasm is another technique which helps. Going against a certain मतलब एक अपने ही गोइंग अगेंस्ट योर नॉर्मल वे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने आपका so this was one guy, one person that I had recently heard. So he was recommending this to someone and I think there was this incident and I'm not so this is Mr. Rajesh Bhatt and he was advising someone कि अगर आपको लगता है कि things are not going as per your wo, then you have to be very you have to be upfront and yet very smart in coming up with solution to address a situation. So he was addressing very typical office solutions, where people have like though boss and two colleagues are very pally, but one colleague is feeling left out. So how does that one colleague deal? ऐसा होता ही है. या फिर how does one deal with a boss who is not very helpful, but super boss is helpful? So how does one deal with those situations? So now one has to kind of come up with, and what you can do personally. Normally हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं. हम सोचते हैं या तो हम लड़ जाएंगे या फिर हम छोड़ देंगे. डू और डाई सिचुएशन होती है. लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अनदर सिचुएशन वेयर वी आर ऑल इन वो जहाँ पे चाणक्य थे, एंड वेयर वी से कि लेट्स थिंक एज टू what all can be done without and what the basic thing and the most important thing is when you are in an office or when you are in a workplace scenario is you have to keep the objective very clear. Objective is आपको काम करवाना है. Objective जीत या हार उस बंदे से नहीं होती है. Objective होता है आपको अपना काम करवाना है.
ऑब्जेक्टिव होता है आपको, यू हैव टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, इफ यू इमेजिन दैट मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है या मुझे कोई स्टाफ मीटिंग में एक पॉइंट एजेंडा क्लियर करवाना है, ठीक है. नाउ देयर इज वन पर्सन हु विल ऑलवेज create some ruckus around that agenda or any agenda, because even if you kind of tell that person कि नहीं ये आपके भले की बात है, some people will do it for the fun of it, because it seems like it is a personal vendetta type of चीज. आपको हमेशा लगेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है इसका. वहां पे आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद रखना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपना काम, द मिनट यू शिफ्ट योर फोकस ऑन हाउ टू गेट माई वर्क डन, फ्रॉम द फोकस कि इसको कैसे मुझे वो करना है, यू विल कम अप विथ सोल्यूशंस. सो यू विल कम अप विथ सोल्यूशन as to how I need to tackle this person's anxiety or frustration, how I need to take help of other people. So there might be situations where you need to take help of other people within the team जो आपको हेल्प कर सकते हैं. You might be in a situation, you might have techniques जो बाकी लोग आपको ऑफर कर सकते हैं, मे बी फीडबैक, क्योंकि बाकी लोग भी उतना ही परेशान होंगे उनसे. तो अगर ऐसा कोई बंदा है जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहा है, हो सकता है बाकी लोग उतना ही परेशान हो, वो आपको इनपुट दे दें कि भैया इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहते हैं, which is very normal, which is very common, because when you are coming up with good solutions for an organization, you would always see कि there are people who actually support you more rather than that one person. Now since that one person is shouting from the rooftop, nobody will actually come up and say कि नहीं ये तो problem है. There are good people who will actually say कि नहीं इसमें problem नहीं है, it's a good agenda, try तो करके देखो. But then कई बार उनको वो करने के लिए कोई नहीं आगे आता. So you have to keep that objective very clear in mind कि ऑब्जेक्टिव है मुझे मेरा काम करवाना है. योर वर्क, गेटिंग द वर्क डन शुड बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एंड नॉट एंड व्हेन यू स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग in very you know, that gets the work done most of the time. क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे ये बिल पास कराना है, मुझे ये एजेंडा पास कराना है, मुझे ये वो पास कराना है, मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़ाना है, मैं कुछ भी करके वो करवाऊंगी. बट द मिनट आई गेट स्टक ऑन डिटेल्स, कौन मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करवा रही है, ये इसका क्या हिडन एजेंडा है, उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ मस्ती के लिए करवा रही है, वो चाहता है कि वो प्रॉब्लम हो. The minute you get stuck, that is the intent and that is where you're giving it. Don't give it. That is what I'm trying to say. Emotions will only be as powerful or as a bigger impediment if you let others or you yourself kind of get entangled in them. Use your emotions to full of your strength. Use your emotions as strength, and there is no stopping you. Keep your objectives very clear in mind. Emotions as passion is what we should be looking at. This is my segment for today. Emotions as passion. Be accountable. Have good habits. And that is where I take your leave for today. Hope you liked what I was saying. I also have my YouTube channel. I'm gonna kind of put it up there as well. It is called what is it called? It's called Nupur Pandey. Please follow me on my YouTube channel as well. Each of these recordings are also up on those channels. Please follow and like and subscribe. Thank you so much, and ta-da!